protection of children POCSO Act. Prior to this act, sexual offences against child were dealt with under the provisions of the IPC 1860. The provisions of the IPC as they were applicable to offences against women were applicable to sexual offences against children as well. ये स्पेशल लॉ लेकिन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जिस तरह से ऑफेंसेस की डिफिनीशन थी वो थोड़ा ज्यादा ऑब्नक्शस टाइप की थी. अब रेप वर्ड बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में यूज करना थोड़ा डिस्गस्टिंग सा लगता है, तो उसकी जगह पर कुछ लेस हर्टफुल सा वर्ड यूज करें. उससे बच्चे की प्रॉब्लम कम नहीं हो जाती, बट थोड़ा सुनने में उतना बुरा न लगे, माहौल थोड़ा लॉ के डिस्कोर्स में आसान सा बने. इसके अलावा कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो बिल्कुल न्यूअर टाइप के थे, जैसे चाइल्ड का पोर्नोग्राफी के पर्पज से यूज करना. तो इन सबको डिफाइन करने की जरूरत थी और इसके लिए सेपरेट टाइप का एग्जाम्पलरी टाइप का पनिशमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत थी. ज्यादा पनिशमेंट, नॉर्मल से ज्यादा पनिशमेंट, जो रेप वगैरह या सेक्सुअल ऑफेंसेस के मामले में जो नॉर्मल पनिशमेंट है उससे ज्यादा पनिशमेंट भी देना पर्पस था और इसी वजह से लॉ बनाया गया है ना. The need was, a need was being felt to define the offenses in less hurtful and yet comprehensive manner, and to provide for greater punishment of sexual offenders.
in the cases involving child. क्या केस लॉ नहीं, कन्वेंशन की बात पहले हुई, अभी आते हैं उस पर। So a need was being felt to define the offences in less hurtful and yet comprehensive manner and to provide for greater punishment of sexual offenders in the cases involving child. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो प्रोसीजर के मामले में थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर का स्टैंडर्ड क्या है? The allegation against the accused must be proven beyond all reasonable doubts in order for him to be pronounced guilty. Accused के खिलाफ जो एलिगेशन है वो सबूतों के आधार पर बिल्कुल संदेह से परे सिद्ध हो जाना चाहिए, तभी आप एक्यूज को, तभी जज जो है अक्यूज को गिल्टी प्रोनाउंस कर सकते हैं। अदरवाइज उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, संदेह का लाभ देकर जज उसको बरी कर दे। तो सबूतों को क्लियरली प्रूव करना चाइल्ड ऑफेंसेस के मामले में बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात होती थी, क्योंकि रेप के केसेस में, सेक्सुअल वायलेशन के केसेस में जो विक्टिम है चाइल्ड, वही प्राइम विटनेस है, और वो प्राइम विटनेस या तो अभी ग्रोन अप नहीं है, ग्रोन अप है भी तो साइकोलॉजिकली डेवलप्ड नहीं है उस तरह से कि प्रॉपर लैंग्वेज में, कोर्ट के अंदर जाकर प्रॉपर लैंग्वेज में अपना एविडेंस दे सके, अपनी बात कह सके, सबूत को पक्का प्रूव कर सके। तो डाउटफुल रह जाता है एविडेंस, है ना, और जज की मजबूरी हो जाती कि उसको जो है अक्यूज्ड को जो है बेनिफिट ऑफ डाउट ग्रांट किया जाए और उसको रिलीज कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से चाइल्ड रेप के मामले में या चाइल्ड के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस के मामले में फ्रीक्वेंट अक्विटल की स्थितियां दिखाई पड़ रही थी, है ना। तो एक तो ये भी जरूरी था कि इस प्रॉब्लम से निपटा जाए, जो प्रूफ स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है उसको थोड़ा रिलैक्स किया जाए, कम किया जाए, एविडेंशियरी प्रोसीडिंग थोड़ा ज्यादा लिबरल तरीके से, आसान तरीके से कोर्ट में चलाया जाए, है ना। बहुत पियर्सिंग क्वेश्चंस चाइल्ड विटनेस से ना पूछे जाए। चाइल्ड विटनेस चाहे क्लियर लैंग्वेज में ना भी बतला पाए, ट्रांसलेटर की मदद से, अपने रिलेटिव्स की मदद से, अपनी फैमिली मेंबर्स की मदद से अगर किसी भी तरह से केस को समहाउ प्रूव कर दिया जाए तो ये केस जो है प्रूवन माना जाएगा और अक्यूज्ड को गिल्टी प्रोनाउंस कर दिया जाएगा, है ना। तो द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम was being faced in procedural and evidentiary matters या evidentiary matters। The strict standard of proof was not being fully met in cases involving offenses against children। The POCSO Act liberalizes the procedural
and evidentiary aspects of the criminal law so as to procure unfailing conviction in sexual offences involving child. तो ये तो नीड हम हमेशा फील की जा रही थी कि कोर्ट में मैटर ठहर नहीं पा रहे, सस्टेन नहीं कर पा रहे, चाइल्ड विटनेस जो है केस को प्रूव नहीं कर पा रहा है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जा रहा है एक्यूज्ड को और वो अक्विट हो जा रहा है ना। इसके अलावा आईपीसी में कुछ एक ऑफेंसेस जो है उनको फुल्ली कवर भी नहीं किया गया है चिल्ड्रन के मामले में, तो उसका स्पेसिफिक डिफिनीशन प्रोवाइड करने के लिए भी लॉ होना चाहिए। तो एक स्पेशल लॉ बनाने की जरूरत तो फील की ही जा रही थी और यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने अपने एक रिजोल्यूशन में ये मेंबर नेशंस को ये कहा कि आप चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए सफिशिएंट मेजर्स उठाएं। अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में या यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे कोई भी डिसीजन हो वो हमारे लिए मैंडेटरी तो नहीं होता, बट नियर मैंडेटरी तो होता ही है कि आप वर्ल्ड सोसाइटी का मेंबर हैं, आप ही के लोगों की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए कोई मेजर लिया जाना है, स्टेप उठाया जाना है, तो आप अगर पीछे रहोगे तो वर्ल्ड कम्युनिटीज, वर्ल्ड के जो नेशंस हैं वो आपको सही लाइट में नहीं देख पाएंगे कि भाई वहां तो बच्चों के प्रोटेक्शन को लेकर कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है, सेपरेट लॉज वगैरह नहीं है, सेपरेट कोर्ट वगैरह का सिस्टम नहीं है। और इन चीजों का असर पड़ता है। आज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। आपके कंट्री में लॉ का जितना बेहतर स्टैंडर्ड होगा, पुलिस और कोर्ट का जितना बेहतर स्टैंडर्ड होगा वर्क और परफॉर्मेंस के मामले में, तो वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज का कॉन्फिडेंस आपके बारे में उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। वो आपके कंट्री में आना चाहेंगे टूरिज्म के पर्पज से, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, जॉब के पर्पज से। इससे आपकी इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा, अल्टीमेटली हर चीज बेनिफिटेड होगी, है ना। इसलिए ये मजबूरी हो जाती है और जरूरत भी है कि हम यूनाइटेड नेशंस वगैरह जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं उसमें जो रिजॉल्व किया जा रहा है, जो संकल्प लिया जा रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने कॉर्पस जुरिस को, अपने लॉ की बॉडी को एडजस्ट करें, अमेंड करें, है ना। तो दी पॉक्सो एक्ट is also inspired by the United Nations Convention on the rights of child of 1992. India had become a signatory, मतलब साइन कर दिया है इंडिया ने, to this convention on December 11, 1992.
This convention sets out, मतलब बतलाता है, लिखकर बतलाता है, standards to be followed for taking care of the interests of child. Parliament of India has enacted the POCSO Act (2012), which can be said to be a special law on the subject. Parliament amended it in 2013, 2018 and 2019. The POCSO bill received the assent of the President on 19th of June 2012, but it came into effect from November 14, 2012.